Hello everyone. Today we have Dr. Dolly Singh, rank 254. Dolly, पहला reaction. सर पहला रिएक्शन तो 10 मिनट्स में रोई कि इट वाज इट्स लाइक अ ड्रीम. Okay. आई कैन नॉट इमेजिन इट्स हाँ लाइक कि आप पहले आपका रैंक मिलने वाला है, काम खत्म है ना. BDS कहाँ से किया आपने? मैंने अमरावती से किया है. अमरावती, अनएडेड महाराष्ट्र. महाराष्ट्र. She has done BDS from Amravati Dental College, महाराष्ट्र. Okay. कब बैच लगाया आपने, कौन सा बैच लगाया? क्या आप हमारे रेगुलर बैच स्टूडेंट थे? जी सर. एक्सक्लूसिव डैम स्टूडेंट. एक्सक्लूसिव डैम स्टूडेंट डॉली सिंह, रैंक 254, नीट MDS 2018. बैच कब लगाया आपने? मैंने लास्ट ईयर लगाई थी सर, मार्च में लगाई थी मैंने. So she has joined DAMS in the month of March 2018. Were you regular in all the classes? Yes sir, I was very regular. Every classes I attend every classes. And once you have joined DAMS, when you started attending the classes, what was your reaction कि classes कैसी हैं? Sir, it was amazing. Like I attended the first class was the oral surgery class. It's like amazing. I don't know. मतलब it's like ऐसा लग रहा था सर कि मतलब ये सब चीजें तो पता ही नहीं है. पता ही नहीं है और कोई इस तरह पढ़ा सकता है. पढ़ा सकता है. 12 hours classes is like what क्या हो रहा है? क्या तुम लोग थके क्लास के बाद? थोड़ा बहुत. बहुत entertaining class. बहुत. All the classes? Yes sir. Even Dr. Ankit Gupta sir class, मतलब he has made that subject so interesting. Kids, we cannot imagine like DAM, DA, DH. It's not like very volatile and very boring subject, but he has made very interesting. जब आपने डैम्स लगाया, क्लासेस अटेंड करना स्टार्ट किया, फीलिंग आई थी कि हाँ इट्स डूएबल? Yes sir, of course. It's doable. It's doable. क्लास टेस्ट, रेगुलर टेस्ट, सब्जेक्ट वाइज टेस्ट, सब कुछ दिया? हम क्लास टेस्ट दिया, सब्जेक्ट वाइज टेस्ट दिया. सारे नहीं हो पाते थे, पर आई ट्राइड कि सारा हो जाए. यू वर फोकस्ड? कभी कभी मैं वो मतलब मोटिवेटेड नहीं होते थे, बट यू वर देयर सर. थैंक्स टू यू सर कि आप थे तो यू हैव मोटिवेटेड ऑल द टाइम. हाँ, एंड यू वर देयर फोकस कि हाँ मुझे सीट निकालनी है. एग्जाम पे पूरा आपका ध्यान था. टोटली फोकस. It's not just classes, we provide some other things also which gives edge to our students कि हाँ it will be more easier to crack exam rather than just attending the classes. Like the CBT which we cover. आपका रैंक कितना था CBT का? 27 rank CBT, all India rank 254. CBT is a benchmark which is basically there, which gives you an idea that yes, we stand here and we are going to crack the exam. And it has reduced your anxiety? Yes sir, of course, because it was the same like the NBE exam. Computer based exam and the environment was exactly same. हमने एक CBT2 भी कंडक्ट किया था. Yes sir, I have given that online. बहुत अच्छे सर, वो क्वेश्चंस काफी मतलब नीट में थे. We are getting review that some of the CBT2 questions were there in NEET exam. Questions had been leaked. No, we have not leaked the paper. But the question were exactly more, I think 50, more than 50 I can say. It was like while giving the exam, I was like ये भी था वो भी था. It's like वो सुना एक डायलॉग जो था कि गोलकीपर तो हिट है, आपके गोलकीपर के दिमाग पे चोट करो, चक दे इंडिया में एक डायलॉग था, है ना. तो हम भी वही सोचते हैं जब हम अपनी क्लासेस को कवर करते हैं. व्हेन वी टेक आवर क्लासेस, व्हेन वी फॉर्म सम MCQs, वी कंडक्ट द टेस्ट एंड ऑल दैट, आवर थिंकिंग इज नॉट लाइक हमें ये कवर करना है. आवर थिंकिंग इज दैट व्हाट विल बी गोइंग ऑन इन द माइंड ऑफ द एग्जामिनर. वी एनालाइज दैट पार्ट एंड वी ट्राई टू कवर दैट पोर्शन इन आवर क्लासेस. which that's why we say we need exhaustive classes. We need 30-40 hours to cover. And have you referred any textbook apart from notes? No, nothing sir. Only blindly I only read DAMS notes. No need to refer any textbook even. Notes cover everything. Not images, nothing. Not. And how many MCQs you have attempted? 233. 233 out of 240. 233 out of 240 questions. And जब attempt किया, were there कि यार these we have covered? Of course सर, सारे क्वेश्चन मतलब वो 7 भी मैंने छोड़े तो ऐसा लगा कि अरे अब तो ज्यादा हो गया, अब नहीं हो गया, नहीं तो वो भी कर सकते. Right now the pattern is like the NEET PG they ask all type of subjects, na all subjects they frame some questions. Do you feel that we cover all those questions in our classes? Of course sir, सारे subjects fully 100% covered. At the end, before the course gets complete, we have announced we are going to provide you TND. Have you promised that? We have not promised TND before. Yes sir. Right? And whatever test you have given, whatever discussion we have provided,
Was it helpful? Yes, sir, of course. I have attended the pharma, pedo. That was very helpful. Questions were very nicely prepared. हाँ, तो आपको एक आइडिया मिल जाता है कि यार ये हमने अटेंड कर लिया, अब हम एंड आई वाज अबाउट टू नो कि क्या क्या मेरे वीक पॉइंट्स हैं, सो आई कैन वर्क ऑन इट. स्ट्रेटजी क्या रहती है आपकी जब आप कोई एमसीक्यू अटेम्प्ट करते हो? व्हाट इज योर स्ट्रेटजी? लाइक द एमसीक्यू इज देयर एंड यू हैव 4 ऑप्शंस. हाउ यू मार्क द आंसर? First, I go to I know the topic. So without seeing the options, I remember what will be the answer. Then I'll go to the options. And suppose if you don't know the options, then you see the options and then you mark. So read the question, think about the answer. If that matches, then the answer is correct. Otherwise, you have to see the options and you have to mark the answer. The 2-pronged strategy, or there are other strategy also, rule of exclusion. Read the question, see all the options, then you exclude one by one, and then the final one is the answer. कौन सी ब्रांच चाहते हैं आप? Oral surgery. Oral surgery. And your parent college knows about you, your selection? Yeah, sir, hopefully, because I posted to my friends group, so they must know. Amravati, Maharashtra. She is from Bihar, Motihari. She had came to Delhi, attended all the classes, discussions, CBT, DVT. Yes, sir. Everything. And she's so happy right now, and I'm sure her parents will be so much proud on her. Yes, sir, they are very proud. Dolly, wish you all the luck, wish you all the bright future. I hope you get whatever branch you want, and wish you all success. We hope our students make a mark, not just in selection but in your future branch also, right? Dolly Singh, rank 254, regular batch, exclusive DAM student 2018. Thank you, sir. Okay.